Well, good morning everyone and welcome back to Data Structures Theory session. You have to bear with the other noise, but that's the environment. Still, we need to study. Well, look, we are continuing our second unit, linear data structures. We have seen stack, we have seen queue, we have seen circular queue also, right? Now, instead of going for double-ended queue and a priority queue today, as we have less time in this session now, so let's go for the program. Earlier, we have seen this program related to stack, right? Now let's create a circular queue program today. In that, if you know how to implement circular queue, simple queue तो आप आसानी से कर ही पाओगे. And I just want to show you that you need not to have any more efforts to do here. You can have this skeleton which is ready with you from the stack, and you can convert that file to queue or a circular queue. Just here and there minor changes as per the requirement. Okay. So what we'll do here is I can do one thing. I can copy and paste that entire folder, right? And then let's do the necessary changes. I'm going to rename this folder and I'll call it a circular queue, so CQ. Okay. Now necessary changes in inner files also. So first of all, let me delete this file because this is the output file. We need not to have it. And the other two files, we are going to rename it. We call this one as a CQ.C file, and the other one, okay, the other one is gonna be CQ.H file. Okay, so I rename both the files here. Sorry. CQ.H file, okay. So now we have header file and we have C file. Both files are open here. Now first, we will look at the demo file. Okay. So this is a circular queue demo. In this one, we are going to include our CQ.H file. Other header, sorry. My bad. Here, we are going to include CQ.H file. Other header files are as it is. And if we want to have a new queue in our program, then what we will do is we will declare a variable for queue. Now that queue we are going to create as an abstract data type. जैसे हमने stack as a data type बनाया था, we are going to create CQ as a data type. So we will create that as a data type later. But अगर वो data type है तो आप एक variable आसानी से declare कर सकते हो. And if you do have that variable, तो आप उसको initialize करो. Init function. Then we'll go for the same menu-driven program, but instead of push, we will say insert. Instead of pop, we will say delete. Instead of pick a pip, we will say pick. Change display is empty is full exit. No change. ये सारा menu जो है बाकी ऐसा ही रहेगा. So list of operations and we have all those options. Then what we do, we ask user to enter operation number. We take that number and we have a switch case here. So at this place, this is gonna be insert operation. So we take a value and we are going to call queue insert function. Now, which we will develop or we will write in a header file. So जैसे आप queue insert करते हो, you can have instead of pop, this is gonna be delete operation, और यहाँ पे आप क्या करोगे, queue delete operation.
Now I'm prefixing q here because delete is a keyword in C program. तो आप delete function नहीं बना सकते हो. Delete is an inbuilt keyword, तो आप delete as a function name use नहीं कर पाओगे. That's why मैंने आगे q लगा दिया. Q delete is a user defined function. So what we will do now, we will follow the same thing. We will prefix all the functions with q. So q init, q insert, q delete, then this is gonna be q. This is pick operation, and this is going to be q pick. Okay. Now here instead of pop value is, आप message दे बोलोगे deleted value is. Topmost value is, उसके बजाय आप लिखोगे front value is. ठीक है. Then change operation, enter the value, enter the position. The function is gonna be q change. Then we will say q display is empty, is full, leave it as it is. Message दोगे q is empty. Okay. Q is empty, q is not empty, q is full, q is not full. Valid choice and end of the program. So these are the changes required inside your demo file. Now let us make all necessary changes in the header file now. Now that's where more number of changes are required. So this is going to be Q implementation. Just a minute, guys. Okay, yeah, let's continue. So this is going to be Q implementation. Size of our queue is going to be 5. It's okay. Type def struct. We will require one data array, and along with the data array inside a queue, we need front as well as rear. और हम इसको बोलेंगे, this is going to be CQ because we are implementing circular queue. Now, just to differentiate that this is a CQ, okay, आप उसके फंक्शन को भी CQ से प्रीफिक्स कर सकते हो. Circular queue init, circular queue insert, circular queue delete. Okay, let's have CQ prefix everywhere. CQ pick, CQ change, is empty, is full, leave it as it is. अगर आपको वहां पे भी CQ is empty, CQ prefix करना है तो कर सकते हो. CQ is empty and CQ is full. Okay, so we'll make those functions in this header file now. Okay, so we have defined a new data type CQ which we can use everywhere now. So we are going to use this as a data type in remaining entire file. This is the init operation, and that's going to be CQ init, circular queue data type, right?
and q as a variable. Now, look, you have to see that you have declared a variable q, and you should pass that variable q to every function. So init में q पास किया, okay, यहाँ पे भी q पास करना होगा, right? So everywhere, make sure that you are passing your q variable here. So in every function, we are going to pass our q variable. That's it. So going back to header file, and we are going to have this circular q address we have received. Just like stack address, we have received q address here. So inside a q, what we do? We initialize our q front to -1, right? As well as we initialize our q rear to -1, and we say q initialize, or we can also say circular q initialized. So initially front, rear both are -1, that is the initial condition. Then we go for insert operation. Now side by side, what you can do is you can keep those algorithms with you. सर्कुलर क्यू के जितने algorithms हमने देखे थे वो आप अपने साथ रख सकते हो to match this program with those algorithms. I'm directly going to write that code. I know that, and I remember all those operations or the algorithms. So we say this is CQ insert function. CQ is the data type, Q is going to be the variable, and we will receive one value जो हमें insert करना है. Now how can you say that your Q is full? Circular Q full है, कब बोल सकते हो? When you can say your circular Q is full? Sorry? किसका n-1? Array is n-1, and the last index is gonna be max -1 यहाँ पर, because max is the size. हाँ, so what I should compare? मुझे क्या compare करना होगा यहाँ पर? Online students में write in a chat box. फ्रंट अगर 0 और रियर अगर मैक्स -1 पे है तो आप बोलोगे कि पूरा क्यू फुल है. So there is one situation where if your q front is 0 and at the same time your q rear is equals to max -1. If this is the case, you can say your Q is full. And there was one more condition. Yes, Jeet has written that the other condition is what? Other condition is if your rear is front -1. या तो फिर in other words you can say if your front is exactly your rear +1. If your front is exactly rear +1, तो भी आप बोलोगे कि आपका Q सर्कुलर Q जो है वो फुल हो गया. Now in these two scenarios, ये दो अलग अलग सिनारियो आपको मिले, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो Q फुल है. So we will go for OR condition, right? So this is the overflow condition.
अगर ये ओवरफ्लो कंडीशन है तो आप इसी कंडीशन को इस फुल में डाल सकते हो, राइट? सो आई सिंपली कॉपी एंड आई विल से CQ फुल के लिए अगर Q वेरिएबल है देन माय कंडीशन इज गोइंग टू बी द सेम. अगर ये है तो मैं बोल दूंगा my Q is full, otherwise it is empty, or not empty but it has few elements where we can store the value. Okay, so this is the is full function. Now coming back to insert. ओवरफ्लो तो पता चल गया. अगर ओवरफ्लो नहीं है देन वी हैव सम स्पेस. सो क्या करेंगे? हम जहां पे खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. याद रखो ये डायलॉग फनी है, लेकिन यही फनी स्टेटमेंट आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट. सो क्यू के अंदर हर बार यही कंडीशन सबसे पहले, if your front is equals to -1 and your rear is also -1, then you are going to make it 0. Your front equals to your rear equals to 0. Otherwise, what you will do is, in general what we do, we make R++. सिंपल क्यू में हम R++ करते हैं, लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या करना होगा? You increase it by 1 and then go for modulo max, right? क्या करते हो? To make it a circular one, to behave in a circular manner, हम मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज करते हैं, मॉड्यूलो साइज. तो 0 1 2 3 4 के बाद वो जैसे ही 5 होगा, 5 मॉड्यूलो 5 मेक्स इट 0, 6 मॉड्यूलो 5 मेक्स इट 1. वैसे वो 6 तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि 0 हो गया, तो 0 के बाद वापस 1. But this is going to help you in that case. So once you have increased your rear, it's very simple. Inside your data array, wherever your rear is pointing to, simply store your value and give a message, value inserted. So अगर Q full है तो overflow message, otherwise we are going to increase our rear in a circular manner. लेकिन उससे पहले अगर पहली वैल्यू है तो फ्रंट रियर दोनों को 0 करो. Then you can easily store your data at a rear place and you are done. So this is your insert operation. Let's have a delete operation, then we will test it. Okay. So the next one, we want to have a look at delete operation. So it's going to be CQ delete. Right? We'll take one value as a null first and then our requirement. How can we say our queue is empty? When do you say your queue is empty? सिंपल क्यू के लिए आप दो कंडीशन लिखते हो. इफ योर फ्रंट इज -1 तो सिंपल क्यू एम्प्टी है. दूसरा कंडीशन ये भी था, इफ योर फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर देन ऑल्सो यू से सिंपल क्यू इज एम्प्टी. लेकिन सर्कुलर क्यू में आपको एक फायदा है, यू विल ओनली टेस्ट योर फ्रंट. इफ योर फ्रंट इज -1 देन योर सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी. क्योंकि जब कभी भी आप सर्कुलर क्यू को खाली करोगे आप उसको इनिशियल कंडीशन में डाल दोगे. Whenever we delete a last value, सर्कुलर क्यू के अंदर से जब कभी भी हम लास्ट वैल्यू को डिलीट करेंगे
तो हम फ्रंट -1 कर देंगे। सो जब भी क्यू खाली है आपका फ्रंट -1 होगा, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर दिस कंडीशन। तो इसके साथ साथ आप बोलोगे कि हाँ, अगर ये एम्प्टीनेस है तो इज एम्प्टी भी बन गया, सी क्यू ठीक है, तो आपका इज एम्प्टी फंक्शन भी रेडी है। Same condition. When can you say your queue is empty? If your front is -1, queue is empty. Well, coming back to delete operation. Okay. So we know when our queue is empty. But if it is not empty, तो else part में आप क्या बोलोगे? अरे भाई queue खाली नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? From front. फ्रंट से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। Okay. You take a value from front, and then generally what we do in a simple queue, आप क्या करते हो? फ्रंट प्लस प्लस करते हो। सिंपल क्यू में आप फ्रंट प्लस प्लस करते हो, लेकिन सर्कुलर क्यू में वो प्लस प्लस नहीं होगा। Now in a circular queue we are going to check कि जो वैल्यू मैं डिलीट कर रहा हूं, if condition, whatever value I am deleting, if that is the last value, तो उसको डिलीट करने के बाद मेरा क्यू खाली हो जाएगा। और अगर मेरा क्यू खाली होता है तो फ्रंट -1 होना चाहिए। That's why we are going to write a condition here. If my front is exactly rear, फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे पॉइंट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही वैल्यू है और आप उसी वैल्यू को डिलीट कर रहे हो। सो इफ दिस इज द केस, व्हाट यू कैन डू is you can reinitialize your front and rear to -1. आप फ्रंट रेयर दोनों को -1 कर दो, इनिशियल कंडीशन। If that is not the case, then in the else one, what you can do is you are about to increase your front by 1, but in a circular manner. So we'll do modulo max. What we'll do? We'll do modulo max. तो ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेशन। फ्रंट से एक डेटा उठाया और उसके बाद चेक किया कि भाई क्या ये लास्ट वैल्यू है। अगर ये लास्ट है तो फ्रंट रेयर -1 कर देंगे। अगर ये लास्ट वैल्यू नहीं है तो हम नॉर्मली फ्रंट को इंक्रीज करेंगे सर्कुलर मैनर में। सो दैट्स द डिलीट ऑपरेशन। लास्ट में आप क्या करते हो? यू रिटर्न दैट वैल्यू एंड सेव इट। सो हमने इनिट, इंसर्ट, डिलीट, इज एम्प्टी, इज फुल, इतने फंक्शन रेडी कर लिए हैं। If you have delete operation, then you can easily copy and paste that thing and remove your front updation. तो बन गया आपका पिक। ये बन गया आपका पिक ऑपरेशन। पिक क्या करता है? इट विल ओनली रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू, इट विल नॉट डिलीट इट। वो डिलीट नहीं करेगा, सिंपल रिटर्न कर देगा। तो वो भी हो गया। नाउ वी कैन नॉट रन दिस फाइल जब तक हम ये कोड अपडेट नहीं करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव स्टैक डेटा टाइप, राइट? So, and even we do not have change and display operation and all. So what I'll do is I will comment this much part right now. Multi-line comment, okay? अगर मैं ये कमेंट नहीं करूंगा तो मैं अपना कोड कंपाइल नहीं कर पाऊंगा।
So let me comment this much part now. अगर ये दोनों फंक्शन कमेंट कर दिए तो C फाइल के अंदर मैं वो फंक्शन कॉल भी नहीं कर पाऊंगा. I cannot call these functions. So let's comment that part also. Now we can run our code and we can test it. जितना कोड अभी तक लिखा है वो हम टेस्ट कर सकते हैं. Okay, so let's run this code and test whether our queue works properly or not. Well, we have few problems. What it says? Okay, this is just a warning because of null constant. Forget it. Circular queue initialized message. Okay, and we have a list of operations. अभी मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मेरा क्यू खाली होना चाहिए. Let us go for option number 6. So it says yes, queue is empty. अगर वो खाली है तो फुल तो नहीं हो सकता. Let's test it. 7. It says no, queue is not full. ठीक है. Let us insert queue values now. So insert is what? Option 1. So I'll go for option 1, value 5. So उसने बोला value inserted. Okay, let's go for few more insert. Option 1, value 6. Option 1, value 7. Option 1, value 8. Option 1, value 9. All these values are inserted. 5, 6, 7, 8 and 9. 5 वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी. Our queue is full now. If I test it with option 7, it says yes, queue is full. And still, if I go and insert something, let's say insert 10, तो वो मुझे बोलेगा queue overflow. So my insert operation is working properly right now. ठीक है. Now what was the front value? What is the front value? 5. Correct. क्योंकि जो सबसे पहले डाला क्यू में वही सबसे पहले निकलेगा. So the front value is 5. Let us test it. Pick operation. Option number 3. It says front value is 5. लेकिन उसने 5 को डिलीट नहीं किया. एक और बार अगर मैं टेस्ट करता हूं ऑप्शन नंबर 3, then still it says front value is 5. Okay, so वो डिलीट नहीं हुआ. लेकिन अगर मैं डिलीट करने जाता हूं ऑप्शन नंबर 2, then it says deleted value is 5. हमने डिलीट किया. जब भी मैं डिलीट करता हूं फ्रंट को इंक्रीज करता हूं. सो नाउ माय फ्रंट वैल्यू इज चेंज्ड. 5 अगर निकल गया तो फ्रंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 6. चेक करो. पिक वैल्यू मतलब पिक द वैल्यू ऑप्शन नंबर 3, तो आपको अब नई वैल्यू मिलेगी. सो द फ्रंट वैल्यू इज 6. बट दिस इज अ सर्कुलर क्यू. अगर एक वैल्यू आप फ्रंट से डिलीट करते हो तो अब आपके पास जगह खाली पड़ी है वेर यू कैन इंसर्ट 10. पहले हमने 10 इंसर्ट किया तो मना कर दिया, लेकिन अब मेरे पास खाली जगह है. आई कैन ट्राई एंड आई कैन इंसर्ट ऑप्शन नंबर 1 एंड आई वांट टू इंसर्ट 10. सो नाउ इट सेज वैल्यू इंसर्टेड. पहले मना किया लेकिन अब चलेगा. क्यों? क्योंकि फ्रंट से हमने कुछ वैल्यू डिलीट की. So now we have empty space in the array and we can store a new value in those empty elements. अगर ये simple queue होता तो possible नहीं था. Because this is a circular queue, we can insert 10 now. एक वैल्यू डिलीट की, एक वैल्यू इंसर्ट की, so now it is full. अगर मैं 11 इंसर्ट करने जाऊंगा तो वो बोलेगा overflow. लेकिन एक वैल्यू डिलीट करूं ऑप्शन नंबर 2, 6 डिलीट हो गया. इसके बाद में 11 इंसर्ट कर सकता हूं. सो इन अ सर्कल मैनर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. एंड नाउ इफ वी गो
if we go on and delete all the values, option number 2, तो 7 मिलेगा, 8, 9, उसके बाद 10 भी मिलेगा and 11 भी मिलेगा, right? So we have deleted all those values. Last value was 11, so now if I go and delete, it says underflow, खाली हो गया मेरा queue फिर से, and still your queue size is 5, तो आप इसी queue को reuse कर पाओगे. That's the benefit of having a circular queue here. Yeah, so that's the circular queue operations. Now let us see the remaining operations: display, CQ display, and CQ change. So let us implement those two operations here in the header file, and then we will quickly test it. So let's focus on the display first. Circular queue display operation. Okay. Now when can you say your queue is empty? Circular queue के लिए एकदम easy condition, अगर front -1 है then queue is empty. Otherwise you will say CQ contains, and then what should I do here? क्या करना होगा हमें? सर्कुलर क्यू है, डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे? लोग नॉर्मली क्यू कहां से स्टार्ट होता है? योर क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रंट and it lasts up to rear, and you go in a forward manner, I++. तो आप क्या करते हो? You simply print your queue data of I, correct? and ये क्यू है, स्टैक नहीं है, तो चलो सेम लाइन में प्रिंट करते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर /n, एक लाइन में प्रिंट करेंगे. Well, so this is a normal simple queue display operator. फ्रंट से लेके rear तक जाओ, आपका पूरा क्यू आ गया. But in a circular queue we have a problem. किसी को याद है? What was that problem in a circular queue? सर्कुलर क्यू में सिंगल फॉरवर्ड लूप चलेगा. जीरो 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम, ये सेम लूप चलेगी. लेकिन अगर आपकी वैल्यूज 3 4 0 1 पे है तो front is 3, rear is 2. If this is the case, two different cases, front is less than rear, front is greater than rear. याद करो. So we have to check what is the current status, what is the current situation of your front and rear here. So if your front is less than or equals to rear, okay, then you can simply go for a single loop, no problem. Otherwise you have to go for two different loops. आपको दो लूप लिखनी पड़ेगी सेकेंड केस में. एक लूप कहां से कहां तक? यू विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट. क्यू जो है हर बार फ्रंट से ही शुरू होता है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट बट इट विल गो अप टू max -1.
अप टू इक्वल्स टू साइन है तो -1, अगर ओनली लेस देन साइन है तो -1 नहीं करूंगा. सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, फ्रंट से लेके मैक्स -1 तक. और दूसरा पार्ट बनेगा 0 से लेके रेयर तक. तब मैं बोलूंगा कि मेरा पूरा क्यूब प्रिंट हो गया. So in a circular cube, you have to think about two different cases. If your front is less than equals to rear, so case number 1. If your front is greater than rear, so case number 2. Case 1 is a simple one, single for loop. Case 2 is a difficult one. वहां पे आपको 2 लूप लिखनी पड़ेगी. So this is the display operation for circular cube. Now, if we want to update our change operation, let's do it. CQ change. CQ is your data type. Position और value आ गई. Then we'll go for Q points to front plus position -1. That was the equation to calculate index from the given position. और ये calculation circular manner में होना चाहिए. So modulo max. So front plus position -1 modulo max. This is the equation to calculate your index. अब index calculate होने के बाद हमें उसको validate करना है. We have to validate that index. If it is a valid index, तो हम क्या करेंगे? We are going to update our data at a calculated index with the value, and we will say value changed. Otherwise, we will say given position is invalid. So that's okay. अब वैलिडेशन जो है वो दोनों केस में अलग अलग है. याद करो लंबा सा कंडीशन जो हमने बनाया था. There are two different cases. एक केस है आपके पास, you have one case like your front is less than or equals to rear. आपके पास एक ये केस है. आपके पास दूसरा केस भी है. अगर आप लंबा सा कंडीशन मिक्स नहीं करना चाहते हो, then what you can do is you can go for else if later. And your second case is your front greater than rear. Right? आपके पास दो केस हैं. अब ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया. लेकिन ये तो हमने केस डिफाइन किया, अभी तक इंडेक्स की वैलिडिटी चेक नहीं की. Now with your first case, at this place you are going to validate your index. You are about to validate your index. अब वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? फ्रंट से लेके रेयर तक होना चाहिए. दिस इज व्हाट इट शुड बी. लेकिन कोड में हम इस तरह से नहीं लिखते. व्हाट वी शुड राइट इन अ कोड, Q points to front is less than equals to index, and at the same time your index is less than equals to Q points to rear. If this is the case, तो आप बोलोगे कि आपका इंडेक्स वैलिड है. Your index is valid. And this happens at the same time when you are at case 1. तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन केस 1 के लिए. ओके. Now is there any problem in the syntax? No. So that is perfect. Now let's think about second one. Now in the second case आपके लिए क्या रहेगा? Where your index should be. तो सेकंड केस में आपके लिए रहता है कि भाई आपका इंडेक्स फ्रंट से लेके
मैक्स तक जा सकता है, या तो फिर और 0 से लेके रेयर तक जा सकता है। ये हो सकता है। अब इसी को हम अगर कोड के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? दिस शुड बी लाइक q points to front less than equals to idx, and at the same time your idx should be less than max. अगर equals to करते हो तो -1. That's your first one. Second one क्या मिलेगा? So second is going to be something like 0 less than equals to idx, and at the same time idx less equals to q points to rear. So that is going to be your second case validity of idx. और अगर पहला केस हो या दूसरा केस हो, दोनों में हम वैल्यू चेंज करते हैं। लास्ट में हम बोलते हैं कि गिवन पोजीशन इज नॉट अ वैलिड वन, चेंज नहीं कर सकते। सो दैट कंप्लीट्स योर चेंज ऑपरेशन ऑल्सो। ओके, सो दैट्स आवर change operation. Now let us very quickly test these two functions. So I'm going to run this code. Okay, what is the problem? Oh, we cannot run our header file. Sorry, we need to run our C file. Sorry. So go to your C file and then run it. You are going to test your demo. Now what's the problem? Okay, not a display function, CQ display. CQ display. Okay. So again I'm going to run it, and we have initialized, options, all other functions we have tested. Let me insert few values right now. So I'm going to insert few values: 5, 6, 7, 8, 9 and 10 में वो overflow बोलेगा. Now at present we are in a forward manner. Case number 1, display करो option number 5. So it says okay 5, 6, 7, 8, 9. Let us change our third position. 7 की जगह पे अगर 2 करना है तो क्या करोगे? So we'll go for option number 4, change. उसने नई वैल्यू मांगी 2 और पोजीशन मांगा 3, 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन. So it says value changed. डिस्प्ले करो. So 7 की जगह पे आपको 2 मिल गया. It works. लेकिन अगर मैं जाता हूं, चलो ऑप्शन नंबर 4, नई वैल्यू कुछ भी डाल दो 3, लेकिन अगर मैं पोजीशन देता हूं 6, if I say position 6, still it says value changed. Now that means our calculation and validation has some problem. डिस्प्ले करके देखो क्या हुआ. Not top, it is front. It is front. Okay, it is not a top, it is a front. So अब क्या हुआ? Let us test, or let us try to find out what is the problem. What was your front? It was 0 earlier. Front was 0. Front plus position minus 1. That is the equation. Front plus position minus 1. That's the equation. Front is 0, position मैंने क्या दिया? 6. 0 plus 6 is 6, minus 1 is 5. Minus 1 is 5.
and 5 modulo 5 becomes 0, and 0 is the valid range from front to rear. So we have a problem here. क्या कर सकते हैं हम? सोचो. What do you think it should be? One thing what you can do is you can separate the index calculation in both the cases. If your front is less or equals to rear, case number 1, इसमें मॉड्यूलो करने की जरूरत ही नहीं है. बोल सकते हो? If your front is less than rear, तो मॉड्यूलो करने की कोई जरूरत नहीं है. When you require modulo operation, when you go in the circle manner, right? In the second case. So what you can do here is, instead of calculating this part, आप IDX calculation जो है उसको कहीं और करोगे, and that goes under, excuse me, that goes under this condition. So here we say I'm going to separate these two conditions first. If this is the case number 1, तो मेरा इंडेक्स कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल रहेगा विदाउट मॉड्यूलो मैक्स, एंड एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू चेक माय इंडेक्स इन दिस रेंज. सॉरी, in that case this is going to be the validity, right? Then else if की जगह आप सिर्फ else लिख सकते हो, and this is gonna be your second case, and inside that this one is going to be the validity of your second part. Okay, and what you have to do now is, in the second case you have to do modulo max. Now just let me test whether is there any problem with syntax. Okay, एक bracket ज़्यादा है, let's remove it. Then this is perfect. At this place, else, no, if it is not less than equal, तो यहाँ पे else condition लिखने की ज़रूरत नहीं. Definitely it's gonna be the other case. If it is not less than equals to, then definitely it's gonna be greater than. And inside this one, यहाँ पे भी एक bracket ज़्यादा है या what? Yes, we have one extra bracket here. So we change it. And everything is perfect now. Let us test it out. So we'll go back to C file and test it. We have a problem. Okay, एक curly bracket कम है. Fine. And at the end we have to complete our function. So going back to C, and then let's run it. Okay, quickly I'm going to
have the earlier case again. 5, 6, 7, 8, 9. If I insert 10, then overflow. And if I display 5, 6, 7, 8, 9. Let's go for change operation. Value is 3, position is 6. Then it says invalid position. So in a change operation, when we do modulo, we have to handle both the cases separately. अब algorithm में आप साथ में लिखोगे चलेगा, but in terms of code, you have to take away. Well, so this is your, oh, it's time. This was the circular queue implementation. आप अपने practical list में simple queue, circular queue दोनों implement करोगे. Okay? So that's all from my side. Thank you, everyone. Online students may leave this meet and join the next one. Thank you.